गाइस वेलकम टू आवर बड़े छोटे रिएक्शन चैनल। तो आज इस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। ये कोई बिलियनर यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल वीडियो है। कोई साउथ कोरियन है तो फॉरेन क्रिएटर है। लगता है कि एक तो इंडियन और एक पाकिस्तानी को बैठा के उसमें सिमिलरिटीज देख रहे हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में। बहुत ही लगता है कि मस्त इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो ये क्रिएटर का जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इनका चैनल का लिंक दे दूंगा। इनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। इतना हमें भी नहीं पता है लेकिन कुछ कुछ अभी बहुत जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो से। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है दोनों का। लगता है कोई फ्रेंडशिप है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई अथी नहीं, एकदम फ्रेंडली होकर एकदम देखना एक साथ होके सब। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। When you greet someone, we say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. हाँ, मुस्लिम से अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, सब लोग नमस्ते बोलते हैं। Namaste. ये जो विदेशी विलन इसको खुद जानना है एक्चुअली पर्सन क्या डिफरेंस है। Indian Pilsha. ओ ये लड़का है वो पाकिस्तानी It's है, my very लड़की first इंडियन time है। to be joined by an Indian guest and Pakistani guest. And we just met also for the first time. Really? But isn't it common for an उसको हिंदी तो नहीं आती, Pakistani इंग्लिश नहीं बोलेगा ना। person or Indian कोरिया person तो हम लोग to समझेंगे meet नहीं। each other from different Outside our places? countries. Outside. So I have prepared for some पाकिस्तान में कहाँ questions से लड़का? and we're going to find out the और ये लड़की? similarities and the differences between the two countries by raising up the O's and X's. हाँ, The first मैं इसे जरा जानना question. था। In my country, English country is is one of our official I languages. think कहीं नहीं है, official language नहीं है। 3, 2, जब 1. पाकिस्तान में 0 नो। Oh, so you guys both मतलब ने क्रॉस speak in खेल रहा है। English. Yeah. No. It's not the national language, but it is official language. So people or kids in the schools official will तो learn है। in वो English. ऑफिशियल मैं What बोलेगा about नेशनल लैंग्वेज English? है। National इंग्लिश language. It's Urdu. वो तो पूरा विश्व का वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल लेवल पर So वो तो kids इंडिया तो in है, their, इंडिया इंग्लिश तो है ही। high school they start पाकिस्तान में भी है। हर देश का अपना अपना भाषा होता है। in English. यहाँ तक अमेरिका का भी अमेरिकन लैंग्वेज है। Hindi is not national. I thought so. We have 23, like you can say national languages, but we have only 2 official languages, Official and Hindi national नहीं है। and English. Guys, official language. Official मैं language, national समझी है। not national language. Then how many languages do you speak? I speak 4 languages, Hindi, English. Korean, Korean. and my mother tongue, Marathi. ओ मराठी महाराष्ट्र। What about you? How many languages? Well, I speak English, I speak Urdu. I Korean little bit, and Punjabi. Little पाकिस्तान bit था, पंजाब में Spanish. भी है। I used to like तो पाकिस्तान में था पंजाब में तो वो पंजाबी बोला जाता है। started learning Spanish. कोरिया में रहते हैं इसलिए Korean इन्हें people पता है just कोरियन भी। So, हाँ, the next हाँ, ये लोग question. foreign में ही रहते हैं। In my country, we love चाय, chai. टी। Of course. Oh, sorry. I know you love chai. 3, 2, 1. All right. Pakistanis loves chai so much, you know. So we say क्या blood वो does किसी not को क्या flow in नो our इसका veins. मतलब हुआ। There is chai flowing down in our veins. So we ओ love chai. 0 क्रॉस all खेलते हैं So हम your गेम blood टिक consists टैक टो of जो बोलते हैं। Chai, yeah. I also know Indian people Yes, also love I mean, chai. as long as I know, British people got the chai culture Yeah, in yeah, India, chai but I culture. think हाँ, Indians drink ब्रिटिश way more ब्रिटिश जब chai आया तब वो than चाय लेके आए थे। Britishers because I don't trend बन चुका है। personally ब्रिटिश सब like शायद it, चाय नहीं but पीते लेकिन हम लोग for पकड़ लिए Indians, हैं। like सुबह सबको चाय minimum 2 चाहिए। cups or 3 cups a day. So, हाँ, When I सुबह went to चाय the चाहिए। UK, ठंड में ज़्यादा मैं खुद चाय पीता हूँ दोनों का सुबह शाम। with exotic spice, you know, in it. yeah, It's different from cinnamon. I think it's masala, so they call it masala Masala chai. chai. मसाला देते So हैं the spice महाराष्ट्र is में masala. We don't have Masala. masala chai. क्या We सीमेंट वाला just have- मसाला? Mostly we love cinnamon मसाला इंग्लिश chai. में बोलते हैं ना, Or एक मसाला। like, milk tea, so there's milk and then you know chai patti. टी लीफ। And then cinnamon भी आता है. In my country, our main religion is Hindu. India. 3, 2, 1. इंडिया। So, Hindu, Yeah. correct. And what about you? Muslims, almost like 93-94% of Muslims, Pakistanis are Muslims. But then we also have Pakistan Hindus intelligent also living in है। Pakistan, लड़की भी। Christianity, and all of them are living quite peacefully. Then what about Muslims in India? Oh, I think there are a lot of Muslims. Like about Pakistan ज़्यादा मुस्लिम 80% are the majorities Hindus, and I don't remember the percentage, but good amount of percentage goes to Muslim and then the other religions. What I heard, like even the Muslims in India, numbers are even bigger than Muslims in Pakistan. पाकिस्तान में because India हिंदू is कम है, so ये Yeah, सबको big. पता so है। big. Yeah, so Yes, even yes. like that, that's what I heard. Correct me if I'm wrong. I myself have a lot of Muslim friends. हाँ, so इंडिया में तो है ही we don't actually हाँ, sometimes even know जितना that इंडिया में मुस्लिम से the ज़्यादा other persons have different religions. मतलब जितना पाकिस्तान में मुस्लिम In से ज़्यादा my इंडिया में country, we can't country we eat can't eat. beef. Oh no, no. India. 3, 2, Yeah, 1.
You can't eat beef. बीफ यानी गाय का मांस You love beef. Okay. I'm sorry. हम लोग हिंदू Hindus धर्म don't eat beef due to religious reasons, but there are people who do. Like if you go to the southern part, Kerala, people do बीफ love को मतलब eat गाय का beef. मांस गाय का नहीं गौ माता होती Only in है certain जय गौ regions I माता think it's लोग bad. खाता है Love गोट हुआ beef ना a फिश lot. हुआ And even चिकन there's a खाता है tradition called Eid. Like Christianity have this, Easter and Christmas. So Pakistanis have these festivals. मुस्लिम called ज़्यादा नॉनवेज Eid. खाते हैं ना खैर It's a हिंदू religious हिंदूज भी खाते हैं festival, लेकिन and we slaughter Vegetarian people, beef India mostly में in the बहुत name of शाकाहारी लोग God. हैं। And then we, for almost 1 week, we have beef or mutton. So what about pork? No, we don't. We cannot eat pork. Oh, you can't eat Yeah, pork. in our religion we can't. So in your religion you can't eat pork, Yeah, no. and in your religion you can't eat beef. Nothing about pork, Yeah. but we can't eat beef. पोर्क मतलब क्या What होता है about chicken? सुअर का Yeah, मांस सुअर का Indians मांस होता है You love chicken. Okay, chicken's fine then. In my country, we have more than 1 India. billion India. population. 3, 2, 1. I mean, look at the size of India. इंडिया की आबादी तो अच्छा चाइना से ज़्यादा हो गई है से आप होने वाली है 1 billion and जल्दी हो जाएगी 350 million population. ये तो and पहले का वीडियो Pakistan, है 210 million. 155 बिलियन ना मिलियन I think it's still growing. 1 billion 30 Yeah. Very fast. Yeah, very, very fast. अब तो Most of 1 the बिलियन people, they 45 have मिलियन bigger समझ लीजिए families. So unlike Korea or China where they have like one, like kids, but in Pakistan we have like at least 3 or 4. And also India is so big. I mean, I don't know why the population is so high. I feel because the Indian population is so high, Indians are everywhere. Like, name any country, you will see Indians there. Like Pakistan. people, except Pakistan, maybe because we're neighbors. Come on. So it's okay. पाकिस्तान में In थोड़े my कम है country, the drinking age is 21. दारू 3, 2, 1. So you can इंडिया start में तो लोग drink पीते हैं from सब नहीं पीते हैं कुछ थोड़ा बहुत पीते Yes, हैं not in some उनके regions धर्म में कहा गया है because in इस्लाम Delhi में like the age शराब is हराम है 25. very लेकिन high. मुस्लिम Very से ज़्यादा high. जो पीते हैं I just turned 25, so it's like now is my drinking age. But Wow. in mostly in other regions, it's 21. What about in So Pakistan? in Pakistan you cannot drink. but So You just can't drink? You can't find them in shops. You can't see in any departmental store. So yeah, no drinks at all. Only maybe in 5-star hotels where the like कहीं the 5-star delegates हाँ, from आज के other modern countries are Muslims coming, नहीं करते हैं, maybe they मतलब would have access. party वार्टी में गए But थोड़ा I बहुत हुआ haven't था। seen and in my whole life alcohol. Wow. Which drink is the most popular in India? It depends on age and sex, but I would still say I personally like used to drink rum a lot. Rum and vodka are like favorite. What about beer? लड़की पीती है क्या Oh, beer is something like it's there. Yeah. It's just like water. Yeah. In my country, we love cricket. दोनों में दोनों होगा 3, 2, confirm 1. You guys love cricket. Cricket teams are very popular in your countries, right? So even though it's not our national game, everyone loves cricket. So if there's a cricket match, especially if there's a cricket match between India and Pakistan, people will Pakistan cricket leave match से every पूरे other world thing and famous they'll क्या? just stick to the देखने के TV लिए एकदम screens. उछलने लगते start हैं इंडिया watching पाकिस्तान the जहाँ match. मैच It's होता है like Korea versus Japan. I guess. Yeah. Yeah. Maybe Yes. more intense than that. It's actually very अभी मैं कुछ intense. देर Like बाहर से आया if देखा खेल रहा India था लोग wins, like you will see firecrackers suddenly going. Like people are ready. Dancing and like if the team wins, there are so many people like businessmen. They give money. उससे रखे हुए about- दिखने there दोनों का is so देखना much क्या business सिमिलरिटीज है क्या डिफरेंसेस हैं Have you ever played cricket before? I used to like during my childhood. Street cricket. Street cricket. At school, do you play cricket? Did you yeah. learn how to cricket? No, we don't learn. No, we don't. It's Yeah. just in our blood. Because I don't know how to play a cricket at all. Then what about other sports other than cricket? Hockey is popular. Yeah, hockey is our basically national sport. Oh, same. India also. Hockey is a national is a game. No, isn't it Kabaddi kabaddi? खेलता Sorry, ही नहीं है। kabaddi. No, it's not kabaddi. It's It's hockey. hockey. It's hockey. Oh, but I never played hockey. Most of the नंबर people पॉपुलर they don't सॉकर play मतलब वो hockey. फुटबॉल It's है just सेकंड the teams. In my country, we usually have dry सूखा weather. वेदर 3, 2, 1. Mistake. Okay, guys can raise both then. दोनों, Maybe दोनों। that's because India is so huge, Yeah. right? So it हर depends स्टेट का on अपना the अलग है। regions. Maybe.
region पे depend करता है। and which months it is. If you go to Mumbai, it's generally extremely humid. But as you move to the northern side, it becomes drier. Drier and colder or hotter? Both. Wow, it gets Hot more भी है, extreme. cold भी है, Yes. तो What about in वसंत Pakistan? वसंत ऋतु like सबसे अच्छा beaches there, the weather is हाँ, quite हर स्टेट हर warm. रीजन As you move to दक्षिण में northern चलो वहाँ का sides, अलग है ना, it's नॉर्थ की extremely साइड का cold. So we टेम्परेचर have तापमान places अलग है where the temperature is like even minus 20, minus 30 something. Yes, yes. And like in my hometown, the weather is like 45 in summer. So there's like very extreme, temperature ranges. Extreme temperature. Wow. Yeah. In my country, the main dish is राइस तो होगा ये भी शायद दोनों का दोनों का होगा One, है भी नहीं भी O's and X. What is your main dish? We call it roti. Roti is kind of like हाँ, रोटी much ज़्यादा thinner than naan. हाँ, We अरे eat यहाँ it भी like है। in the ये हम लोग दिन में चावल breakfast, खाते हैं, रात में lunch रोटी खाते and हैं। dinner. With the various variations. Like in the कुछ morning, साइड it's महाराष्ट्र more में like चावल नहीं paratha. खाता नॉर्थ In साउथ my इंडिया home, तरफ we eat यहाँ rice बहुत like सारा हो maybe जाएगा, 3 दोनों times option a week. सही But है। there are some regions where they रोटी, eat rice a lot. But अपना overall, यहाँ ना हर घर का नहीं, हाँ कुछ जरूरी जगह वहाँ का Always both माइंड सेट अलग, वहाँ लोग कुछ because अलग where खाते the हैं weather is dry, कितना production आदमी is ऐसा very high. रोटी खाता दिन में भी रात में So भी they कितना चावल नहीं eat खाएगा roti, like no rice at all. हाँ, चावल को honestly. भूंज के ना But if you वो move to the क्या बोलते coastal हैं वो areas, just rice. Like even the बिरयानी roti हाँ is made नहीं with like नॉर्मल rice हम लोग खाते हैं flour. प्याज व्याज yeah. लेके we love roti so much. I have like allergy to wheat flour. So when I go to Pakistan these days and I tell them like I can't eat roti, they say to me like, "Oh, how are you alive? Roti has power. Roti has energy." That's what they believe. With रोटी किसमें क्या naan, बोलते you हैं usually have चपाती it with curry, right? ब्रेड तो But खाते हैं वो what क्या है about with roti? Do you have it with उसका क्या curry करना as है? well? Same with roti with curry, some Yeah. like chicken, beans, something like that. Sometimes like the roti is always the main course. After eating the roti, you still have some space left. Then you're like, do you want some rice? Then It's you more like know. a side dish. Yes, like it's like after, do you want some rice? And then that person will have like this amount of rice with dal. So it's like Dal, like dal. lentils. It's not like the main dish. But the Roti dal या चावल Pakistanis, dal. the most loved food is made of rice. Basically, it's called biryani. It's not very biryani. popular. The last question. We are the best. 3, 2, कोई कहेगा कि मैं 1. कंट्री बेस्ट नहीं है We are the best. We are the best. Who are the best? Well, let us know in the comments. I think like you guys हाँ, love वो your country. You पॉलिटिकल guys लेवल पर have नीचे होता है pride लेकिन in दोनों your कंट्री बेस्ट है country. And you guys have kind of a rivalry as well, right? Me too. Although we are the best. Just kidding. So, alright, we've been taking a look at the similarities and differences Best वाला कुछ नहीं बोला between ना। Pakistan इसको अधिक कर and दिया। India. I've learned a lot from you guys. Thank you सारे very much वीडियो for को- तो joining. गाइस इस साथ खत्म होती है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस थी बहुत कुछ जानने को मिला बहुत सिमिलरिटी है बहुत से डिफरेंसेस भी है डिफरेंसेस भी है और तो क्या इसको बताओ क्या क्या क्वेश्चन किया वो ये जो क्या बिलियनर बिली जो भी था कोरियन यही सब जनरली पूछा क्रिकेट के बारे में फूड के बारे में ड्रंक कौन करता है या कौन सा मतलब लैंग्वेज बोला जाता है ना कौन सा लैंग्वेज तो खैर ऑफिशियल ही इंग्लिश और हिंदी दो ही है हाँ और बाकी नेशनल लैंग्वेज तो यहाँ भी नहीं है यहाँ कोई है ही नहीं हाँ मतलब और क्या चीज़ था उसमें और वो थी बोला गया था वो क्या क्रिकेट का ना क्रिकेट मेन हॉकी है लेकिन कोई हॉकी यहाँ कोई शायद कि खेलता है कि देखा हम आज तक कभी नहीं देखे इंडिया में हॉकी खेलते हैं शायद पाकिस्तान में किसी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट ज्यादा जनरली सही कहा उन्होंने खून में बसा हुआ है हाँ। क्रिकेट ही ज्यादा मतलब गली मोहल्ला में कहीं भी कोई लड़का सब खेल रहा है देखते हैं गांव रहे शहर है लोग क्रिकेट ही खेलते हैं ज़्यादा पसंद करते हैं तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस थी क्या जानने को बहुत चैनल मिलता है तो इसी के साथ यार वीडियो को खत्म करते हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है तो इनको शेयर कीजिए ताकि इंडिया पाकिस्तान दोनों लोग देखें और जाने अपने अपने देश के बारे में एक दूसरे का सिमिलरिटीज जाने डिफरेंसेस जाने बिल्कुल तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो गाइस बाय